Alright, let us do a small invocation. अपने हार्ट चक्रा जो यहाँ होता है और अपने क्राउन चक्रा जो यहाँ होता है ऊपर सर के, इन पे फोकस करके let us do the invocation. To the Supreme God, to the Great Divine Father and the Great Divine Mother, thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine power, divine healing, guidance, mercy, help, and protection. We thank you. To our great spiritual teacher, Master Chokok Soy, to the great Bodhisattva Mailing, to all the great ones, to all the holy gurus, holy masters, great saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, to our great higher soul, we thank you for your great blessings. Thank you so much. Thank you. Special thanks to Swami Rama and to his great teacher, the Bengali Baba, also called as Babaji by some people. We thank you for your great blessings. Thank you for blessing us with deeper understanding of your teachings, illumination, divine oneness in all areas of life. Thank you, thank you, thank you. All right. तो हम जो है आज की सेशन या आज की स्टडी जो है चालू करेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में डिस्कस करेंगे, ठीक है? Blessings and a curse. When I became egotistical, I fell down. This was my experience. My master said, try your best, but whenever you feed your ego, whenever you try to do anything selfish, you will not succeed. This is my curse on you. I looked at him in surprise. What was he saying? Then he continued, this is my blessing to you that whenever you want to become selfless, loving, and without ego, you will find a great force behind you and you will never fail to achieve some good. See, this is good, no? A selfish man always thinks and talks about himself. His selfishness makes him self-centered and miserable. The shortest cut to self-enlightenment is to cut through the ego. See, the shortest cut or the shortcut to self-enlightenment is to cut through the ego. Surrender before the highest one. Satsang, company of the sages, and the constant awareness of the center within one help one in going beyond the mire of delusion. The ego is also purified by cultivating selflessness. Unpurified ego is an evil which obstructs one's own progress. But the purified ego is a means in discriminating real self from the not real self. From the not real self from mere self. No one can expand his consciousness if he remains egotistical. Those who build boundaries around themselves because of their ego problems invariably create suffering for themselves. But those who try to be constantly aware of their unity with others can remain happy and fearless, enjoying every moment of life. Those who are selfless, humble, and loving are the true benefactors of humanity. आई थिंक ये इन्होंने मतलब इनके जो टीचर हैं इन्होंने इनको ब्लेसिंग दी है, वो एक्चुअली सब पे अप्लाई होती है, ऑलमोस्ट लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होती है कि आप जहाँ भी दूसरों के लिए कुछ कुछ करने जाते हैं या सेवा करने जाते हैं, आप चाहें चाहे ना चाहें, जो मतलब आपके पीछे स्पिरिचुअल फोर्सेस आपके साथ काम करती ही करती हैं. मतलब हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर है मास्टर चौकसोई, वो हमको बताते हैं कि जब भी आप दूसरों के लिए कुछ करने की ठानते हैं, आपके लिए कुछ एंजल्स को असाइन कर दे कर दिया जाता है. आप माने चाहे ना माने, आपको पता हो चाहे ना पता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. आपको हेल्प जो मिलती है इनर वर्ल्ड से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेल्प मिलती है, और इसी के लिए मिलती है बिकॉज अब आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि चलो आज मैं क्या बोलते हैं, लंगर सेवा शुरू करूंगा, आज से लेके अगले 1 साल तक पूरा 365 दिन लंगर सेवा करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, लोगों को खाना खिलाऊंगा फ्री में अपने पैसे डाल के, ठीक है. अब इस काम में मैक्सिमम लोगों को फायदा हो, आपकी मैक्सिमम फंडिंग आए इस अच्छे काम के लिए, आपका जो है पूरा सिस्टम प्रॉपरली चले, आपको सही लोग मिले इस काम के लिए,
इन चीज़ों की हेल्प आपको की जाती है एंजेलिक हेल्प के द्वारा या बाकी और भी हेल्प जो होंगी उनके द्वारा। ये आपको दिया जाता है आइडियली, बिकॉज इस अच्छे काम में आपकी जितनी सहायता हो सके उतना उतना अच्छा है, मतलब ना बहुत लोगों का फायदा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एंजल का साइन, अगर आपने ये बोला कि चलो आज से मैं हीलिंग करना लोगों की हीलिंग करना चालू करूंगा, तो आपकी हीलिंग के प्रोसेस में जितने भी लोग मतलब आपसे हेल्प ले सकेंगे, दे विल कम इन योर पाथ। फॉर एग्जाम्पल, आएंगे आएंगे आपके आपके पास, बिकॉज आप अच्छा काम कर रहे हो एंड दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट। वर्क्स लाइक दैट। आगे चलते हैं। पाथ ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इसलिए उन्होंने ये बोला है कि जब भी हम अपने लिए कुछ करते हैं ना, तो मतलब वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली, उसमें वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर दूसरों के लिए करते हैं, इसलिए आपको पता है जो बोलते हैं ना कि बहुत जो आजकल जो इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप गूगल वगैरह में देखते हैं कि सेल्फ लव एंड सेल्फ ये सेल्फ वो, ये सारे के सारे ना एक तरीके से सिर्फ अपने आप को देखते हुए ही बेस्ड है। बट द मोस्ट आइडियल सेल्फ लव में you take care of your body, your physical body, your emotions, your thoughts, you take care of them. But ये मतलब सिर्फ अपने लिए करना, मैं आई थिंक मैं आपको कैसे समझाऊंगा इसको, कि लोग जो है इन जनरल ये बोलते हैं कि मैं ऑफिस में काम करके बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मुझे सेल्फ लव के लिए आई विल वॉच अ मूवी, आई विल ईट पॉपकॉर्न एंड आई विल जस्ट नॉट डू एनीथिंग। अब इसको सेल्फ लव कहीं से भी नहीं बोलते एक्चुअली। ये एक्चुअली भी किसी भी एंगल से सेल्फ लव की डेफिनेशन में नहीं आता है। इंस्टेड ये आता है सेल्फ इंडल्जेंस में या फिर सेल्फ हार्म वाली कैटेगरी में आता है। सो इस तरह की चीज़ों से आइडियली मतलब बच के रहेंगे तो यू प्रॉब्ली फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। एक अच्छी फॉर्म सेल्फ लव जो होता है वो होता है कि आपको आपके ट्रू लव के सोर्स के साथ कनेक्ट करना। सेल्फ लव की प्रैक्टिस उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई मेडिटेशन किया उसको बोलते हैं सेल्फ लव। आपने अगर अपने आप को हील किया या आपने कोई मंत्र चैंट किया उसको बोलते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव की प्रैक्टिस आइडियली होती है आपके अंदर जो लव का सोर्स है, जब तक आप उसे लिंक नहीं करोगे तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस होगी भी कैसे? मतलब इट्स नॉट गोना ब्रिंग इन एनी रिजल्ट, राइट? सो एक बार थोड़ा इसको समझ के एनालाइज करना पड़ेगा। द पाथ ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस ये थर्ड, आई थिंक थर्ड सेक्शन है इसका। डायरेक्ट एक्सपीरियंस is the highest of all ways of gaining knowledge. All other means are only fragments in the path of self-realization. Purity, one-pointedness, and control of the mind are essentials. An impure mind hallucinates and creates obstructions, but an orderly mind is an instrument for direct experiences. An impure mind hallucinates and creates obstructions, but an orderly mind is an instrument for direct experiences. Direct experience alone is the means. One day my master told me to sit down. He asked, Are you a learned boy? I could say anything to him, however outrageous. It was the only place where I could be completely frank. I was never sorry, no matter what I told him. He used to enjoy my foolishness. I replied, Of course I'm learned. He asked, What have you learned and who taught you? Explain it to me. Our mother is our first teacher, then our father, then our brothers and sisters. Later, we learn from the children with whom we play, from teachers at school, and from the writers of the books. No matter what you have learned, you have not learned a single thing independently of others. मतलब आपने जो कुछ भी सीखा है, मतलब माता से, पिता से, भाई बहनों से, स्कूल में टीचर से, स्कूल के बच्चों से, बुक से, आपने जो कुछ भी सीखा है वो आपने दूसरों की सहायता से सीखा है, अपने आप क्या सीखा है। तो बोलते हैं कि दे हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स, उन्होंने भी बाकी लोगों से सीखा है। येट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस यू कॉल योर सेल्फ लर्नड।
I pity you because you have not learned anything independently. You have apparently concluded that there is no such thing as independent learning in the world. Your ideas are the ideas of others. I said, wait a minute, let me think. It's a shocking realization that whatever I had learned was nothing of my own. If you put yourself in my place, you may well have the same feeling. The knowledge on which you depend is not at all your knowledge. That is why it is not satisfying, no matter how much of it you possess. Even if you have mastered an entire library, it will never satisfy. Then how can I be enlightened? I asked. He said, by experimenting with this knowledge that you have acquired from outside. Find out for yourself with the help of a direct experience. Finally, you will come to a conclusive and fruitful stage of knowledge. All knowing is in vain if it is not direct. कितनी अच्छी, all knowing is in vain if it is not direct. Indirect knowledge is of course informative, but not fulfilling. All wise people throughout history have gone through great pains in order to know the truth directly. They were not satisfied by the mere opinions of others. They were not frightened off from this quest by the defenders of orthodoxy and dogma, who persecuted and sometimes even executed them because their conclusions were different. Since that time, I've tried to follow his advice. I've found that direct experience is a final test of the validity of knowledge. When you have known truth directly, you have the best kind of confirmation. Most of you go to your friends and give your viewpoint. You are seeking confirmation in their opinions. Whatever you think, you want others to confirm it by agreeing with you. To say, yes, what you think is right, but somebody else's opinion is no test of truth. When you know truth directly, you do not need to ask your neighbors or your teacher. You don't have to seek confirmation in books. Spiritual truth does not need an external witness. As long as you doubt, it means you have yet to know. Tread the path of direct experience until you attain that state where everything is clear. Until all of your doubts are resolved, direct experience alone has access to the real source of knowledge. So it's a very good thing actually. I think इसका अगला वाला section भी इससे linked है. Basically, मतलब the great teacher is saying that आप जो enlightened लोग जो होते हैं वो दूसरों की बातों में कभी क्यों नहीं आते हैं कि उनकी लाइफ में उनको ट्रूथ का या सच का आभास हो चुका है और उनकी लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ ट्रूथ से आगे जा चुके हैं वो डीपेस्ट लेवल ऑफ ट्रूथ का उनको क्लियर आभास है एक्चुअली इसको देखने के लिए इस लेवल ऑफ ट्रूथ को एक्सपीरियंस करने के लिए एक चीज को बोलते हैं आई ऑफ विजडम उसका खुला हुआ रहना एक्टिवेटेड रहना बहुत जरूरी होता है आई ऑफ विजडम का आई ऑफ विजडम अगर आप सोचेंगे भी मतलब तो आपको मालूम हो जाएगा कि आई ऑफ विजडम बेसिकली सेज जिससे आपको सच का आभास होता है यानी कि शिव जी जो थे यार जो बोलते कि उनकी जब तीसरी आंख खुलती है तो सब भस्म हो जाता है राइट बेसिकली इसमें माया यानी कि डिल्यूजन्स जो होते हैं वो भस्म होते हैं सच कभी कहीं नहीं जा सकता मतलब फॉर्म जो होता है वो खत्म हो जाता है ट्रूथ बस रह जाता है राइट तो शिव जी की आंख को बोलते हैं रुद्र अक्षा रुद्राक्ष वैसे मतलब एक खाली एक सीड है बट अक्षा द आई ऑफ रुद्रा शिवा राइट सो शिव जी की आंख तीसरी आंख वो सबके पास होती है उसको बोलते हैं थर्ड आई और डीप मेडिटेशन करने के बाद ये थर्ड आई जो है प्रॉपर एक होती है जिससे या जिसकी हेल्प से डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया जा सकता है उसके बिना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस ले पाना बहुत मुश्किल है बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्चुअली सो बहुत मुश्किल का मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक्सपीरियंस का अगर वो खुला नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है एक्चुअली ठीक है चलिए आगे चलते हैं रियल नॉलेज रिमूव सफरिंग सेल्फ रिलायंस इज इंपॉर्टेंट
It comes when you start receiving experiences directly from inside. No doubt you need a teacher, you need a guide. I'm not telling you that you should not learn things from other people or that you need not study books. But I have met people who did not even know the alphabet, and yet, whenever we had difficulty in understanding some profound truth or scripture, they alone could give us a solution. Once I was teaching the Brahma Sutras. It is one of the most abstruse books in Vedantic literature. Aphorisms which I myself did not really understand, I explained to my students, and they seemed satisfied, but I was not. So in the evening, I would go to a Swami who had not actually studied scriptures at all. He could not even sign his name, yet his knowledge was unmatched. He said, "You will never understand these aphorisms, these terse aphorisms, if you do not have the direct experience." Then he told me this story to help me understand the difference between direct and indirect knowledge. Swami Rama in Uttarkashi Himalayas. What a photogenic person, no? A master, so ये example है, a master had a student who had never seen a cow or tasted milk. But he knew that milk was nutritious, so he wanted to find a cow, milk it, and drink the milk. He went to his master and asked him, "Do you know anything about cows?" The master answered, "Of course." The student requested, "Please describe a cow to me." So the master described the cow. Cow has four legs. It is a tame, docile animal, not found in the forest but in villages. Its milk is white and it's very good for your health. He described the type of tail and the ears it has, everything. After this description, the student went in search of a cow. On the way, he came across a statue of a cow. He looked and thought, "This is surely what my master described to me." By chance, that day, some people who lived nearby were whitewashing their house, and there was a bucket of whitewash near the statue. The student saw it and concluded, "This must be that milk which they say is good for you to drink." He gulped down some of the whitewash, became terribly ill, and had to be taken to hospital. After he recovered, he went back to his master and angrily charged, "You are no teacher." His master asked, "What is the matter?" The student replied, "Your description of a cow was not at all accurate. What happened?" He explained, and master asked, "Did you milk the cow yourself?" "No." "That is why you suffered." Because कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे का कुछ बताया हुआ आपने कुछ समझ लिया, and the cause of suffering among intellectuals today is not because they don't really know. They know a little, but what they know is not their own knowledge, and and that is why they suffer. देखो बहुत अच्छी बात है इसमें लिखा कि the cause of suffering among intellectuals today is not because they don't know. They know a little, but what they know is not their own knowledge, and that is why they suffer. A little or partial knowledge is always dangerous, like partial truths. A partial truth is not truth at all. So is the case with partial knowledge. The wise directly perceive truth. The sage who did not even know the alphabet of any language would always remove my doubt. Systematic study under a self-realized and competent teacher helps in purifying the ego. Otherwise, scriptural knowledge makes one egotistical. He who is called an intellectual man today only collects facts from various books and scriptures. Does he really know what is going on, or what is he doing? Feeding intellect with such a various knowledge is like eating a food with no food value, maybe like a burger. One who is constantly eating such a food remains sick and also makes others sick. We meet many teachers and they all teach well, but a student can assimilate only that which is unalloyed and comes directly from self-experienced teachers. तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छी चीज है एक्चुअली. याद है आपको एक एक बहुत सी कहावत है.
आई थिंक मेरे घर में एक बार जब मैं छोटा था उस टाइम पे एक पेंटिंग टंगी थी, एक फोटोग्राफ टंगी थी, और उसमें एक लाइन लिखी थी, उसमें ये लिखी थी, उसमें उसमें ये लिखा था, द ग्रेटेस्ट ट्रूथ्स आर द सिंपलेस्ट, द ग्रेटेस्ट ट्रूथ्स आर द सिंपलेस्ट एक्चुअली। ये लाइन इनको समझने के लिए मुझे बहुत लंबा समय लग गया था, उस समय मैं खाली पढ़ के बस याद रह गया था। उसको एक्चुअली पढ़ के समझने में, उसकी उसको धारण करने में अंदर बहुत लंबा समय लग गया था। कैसे ग्रेटेस्ट इतने सिंपल हो सकते हैं ये। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि एक स्वामी जी जिनको अल्फाबेट का ABC भी नहीं आता था, क ख ग भी नहीं आता था, उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो ब्रह्म सूत्र होते हैं उनको पढ़ के एक लर्नेड, सो कॉल्ड लर्नेड सेंट को, मतलब स्वामी रामा को सिखाया करते थे वो, क्योंकि उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस था। एंड उसकी पावर से यू कैन डिसाइफर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज ये सब चीजें उसी को पॉइंट करती हैं एक्चुअली। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज थिंग टू एम इन जनरल फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मतलब मेडिटेशन का पर्पस होना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअली। देन ऑल ऑफ दीस थिंग्स एक्चुअली स्टार्ट टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस, लॉट ऑफ सेंस। अब इसको ऐसे देखिएगा कि अगर आपकी लाइफ जो है एक स्पेसिफिक ट्रैक पे जा रही है, आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, या मतलब डे बाय डे मतलब जिंदगी काटना है, चलो एक हफ्ते के बाद ये करेंगे, पर लाइफ एक्चुअली में कहाँ जा रही है, मतलब लाइफ का बड़ा गोल क्या है। ये कभी कभी क्या होता है कि जब आपके अपर चक्र जब काम करने लगते हैं ना, क्राउन हो गया, फोरहेड हो गया, अचना हो गया प्रॉपरली, उस टाइम पे आपको आपको आपकी लाइफ दिखनी शुरू हो जाती है आगे जाके कि एग्जैक्टली ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। एग्जैक्ट डिटेल्स में नहीं भी मालूम होता, आपको एसेंस, पर आपको एसेंस में पक्का मालूम हो जाता है। उसकी वैल्यू बहुत होती है। ये अब उसके भरोसे पे, या आपको जो आगे क्या होने वाला उसकी गाइडेंस से आप अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकते हो कि ये एक्टिविटी उसको देखते हुए ठीक है या नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या कितनी प्रोडक्टिव है उसको देखते हुए। सो दिस इज यूजफुल। एंड मेडिटेशंस के प्रभाव में इनकी जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल भी होते हैं एक्चुअली। ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट टू लिव, जो आपको अपने बारे में पता है कि आगे मेरी लाइफ का पर्पस ऐसा है। और ये डीप मेडिटेशंस में ऑलमोस्ट मतलब मालूम चलता है। लेट्स गेट बैक टू व्हाट स्वामी रामा वाज सेइंग, कि उनके टीचर ने उनसे पूछा था कि तुम सीखे हुए हो, आर यू लर्नड ऑलरेडी, तो या आई एम लर्नड। फिर उन्होंने साफ साफ ये बताया कि तुम्हारी जितनी भी नॉलेज है वो दूसरों से ली हुई है, तुम्हारी कोई भी अपनी खुद की नॉलेज नहीं है। प्राणिक हीलिंग में हम, जो स्कूल में हम बोलते हैं कि कुछ नॉलेज जो है कोई इंट्यूशन देता है। डीप मेडिटेशन के अंदर आप जब मेडिटेशन करते हैं, तो जब कोई इंट्यूशन काम करता है तो वो आपको स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। उसके दम पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बिकॉज आपकी खुद की अर्निंग है, अंदर से आई है। फिर आप उसको वैलिडेट करते हो उस वो टीचिंग को कि अच्छा ये जो आया है ये किस तरह की नॉलेज है एक्चुअली, इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है, ये कैसे काम करती है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि 10 साल पहले पढ़ी हुई चीज जो है आपको मेडिटेशन में उसमें एक नई इंसाइट आई थी उसके ऊपर। ये चीजें इंट्यूशन से आती हैं, इन जनरल डीप मेडिटेशन में आती हैं, और बहुत कॉमन चीज़ है उन लोगों के लिए जो इन जनरल मतलब मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर। सो एक जो एग्जाम्पल था कि दूसरों से ली हुई नॉलेज का, ये था कि आपने किसी से कुछ सुना, आपने कुछ और समझ लिया, और जो है जाके आपने जिंदगी उस हिसाब से जीनी शुरू कर दी। जैसे कि फेमिनिज्म का जो मूवमेंट आया था अभी, फेमिनिज्म का मूवमेंट एक बहुत एक अलग उस पे आया था, क्या बोलते हैं, अलग उसमें आया था कि हम लोग जो है फेमिनिज्म की, वी वैल्यू फीमेल सेरेब्रल कैपेसिटी इक्वल टू मेल सेरेब्रल कैपेसिटी, मतलब विमेन और मेन के जो शारीरिक क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं हम, विमेन और मेन की जो मेंटल कैपेसिटी है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने की वो सेम है ऑलमोस्ट। हम उसको बेंचमार्क रख के बोलते हैं कि इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक्चुअल पॉइंट था। पर जिन लोगों को समझ भी नहीं है ये वाली बात, उन्होंने उनको फिर भी मतलब वो झंडा से फेमिनिज्म का वो झंडा उड़ा रखा। और बेसिकली कुछ लोग जो है उसको मिस इंटरप्रेट करके बिना कुछ समझे हुए रूड होने लग गए बेसिकली, कि हमें लड़कों की जरूरत नहीं है एक्चुअली, वी डोंट नीड मेन।
वी आर सेल्फ सफिशिएंट। ये तो बेवकूफी है ना, मतलब ये तो सोचना ही बेवकूफी है एक्चुअली। इस सोच में दिखता है कि सोचा ही नहीं गया एक्चुअली। जो पहले वाला जो पॉइंट था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा पॉइंट था, कि जो है सेरेब्रल कैपेसिटी जो है, मतलब सोचने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग की क्षमता, वो मर्द और औरत की बराबर होती है। और अच्छी भी, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और दोनों को बराबरी पे रख के दोनों को एनालाइज करना चाहिए एक्चुअली, है ना। अगर दोनों सेम सब्जेक्ट पढ़ा है तो हो सकता है कि दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट दोनों की जो इम्पैक्ट जो है उन दोनों को स्टडी किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि विमेन का कम है और मैन का ज्यादा है, ये सही नहीं है। जेंडर के बेस पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो अच्छा पॉइंट है। जब इसको जब डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, जब इसको प्रॉपरली समझा नहीं जाता, उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आप देख रहे हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो उतनी क्या बोलते हैं, वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है एक्चुअली। तो और वो सही नहीं है। सही का मतलब ये है कि उस कि जैसे कि अभी रिसेंटली ये आया था कि आई डोंट नीड मैन, आई कैन डू एनीथिंग ऑन माई ओन। ठीक है, तो भैया फिर मतलब अगर ऐसा ही है तो फिर देन गॉड प्रीटी मच नोज बेस्ट, राइट, ही टेक द मैन ऑफ द अर्थ। पैसा है नहीं। ये होता है कि अगर कोई आदमी मतलब बहुत ही डीपली हर्ट हुआ है पहले से और हील नहीं हुआ, तो इस तरह के एक्सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यूज जो होते हैं वो उस तरह के लोग ही बना पाते हैं एक्चुअली। और इनको समझ में नहीं आता ये वाली बात एक्चुअली। जब समझ में नहीं आएगी ये इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज है, तो लाइफ की डायरेक्शन जो है वो सही नहीं जाएगी। मतलब आगे का आपको नहीं दिख रहा एक्चुअली। आगे हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाए लाइफ में कि जो है आपकी कहीं पे कार कार क्रैश हो जाए, और केवल आसपास में आदमी ही हो आपको बचाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल। तो क्योंकि आपके मुंह से मतलब बार 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 ये वाली बातें निकली थी कि भैया नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमको, तो कार्मिक एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, आपको वो भी हेल्प नहीं मिलेगी उसके बाद, है ना। मतलब मैं कोई समझाने की ये कोशिश करूँ कि अगर आपको कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है एक अच्छे किसी कॉन्सेप्ट का या किसी अच्छे लॉजिक का, अपने दूसरों से बात सुन ली, अपने अपने मन में कुछ कुछ मतलब बना लिया और उस हिसाब से जिंदगी जीने के लिए निकल पड़े, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर। इसीलिए हम एक किसी वाइज मैन के पास जाते हैं एडवाइस के लिए, बिकॉज वाइज मैन जो है वो बहुत सारी सिचुएशंस में से उसने डील किया हुआ है। एक मेरी दादी जी ने बहुत सी कहानी सुनाई थी। उन्होंने ये सुनाया था कि जो है एक शादी की टोली गई थी, और उन्होंने ये कहा था, मतलब लड़की वालों ने ये कहा था कि हम जो है अ, केवल जवान या मतलब यंग लोगों को ही शादी में आपकी साइड से बुलाएंगे, दूल्हे वालों की साइड से केवल जवान लोगों को बुलाएंगे बस। फिर वहाँ पे कुछ गेम खिलाएंगे, अगर आप गेम खेल खेल गए प्रॉपरली, अच्छे से जीत गए, तब हम आपकी शादी, मतलब दूल्हे की शादी अपनी बेटी से इससे करवा देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। पर जब वो लोग गए तो मतलब जो है जो एक गेम खेला कि देखो ये जो है 6 भेड़े हैं, भेड़े मतलब ये गोट्स हैं एक्चुअली, और इन गोट्स को आपको आज ही खाना पड़ेगा, मतलब आज के 6 ये गोट्स आप खाएंगे, एंड उसके बाद आप इनको लेके जाएंगे। अब सडनली हो गए 6 गोट्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं एक्चुअली, सच में जो बहुत होती है, मतलब जितने लोग थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, लेट्स गो एंड थिंक। जब वो सोच के वापस आए तो उन्होंने बोला कि हमें ठीक है हम खाएंगे, पर आप एक भेड़ पहले सर्व करेंगे, जब हम पूरी तरह से खा लेंगे तब आप दूसरी भेड़ को काटेंगे। फिर जब उसको खा के हम खत्म कर देंगे पूरी तरह से, फिर तीसरी भेड़ को काटेंगे। तो ये सोचते समझे कि नहीं है, ये तो ये अकेले नहीं आए, ये किसी वाइज आदमी के साथ आए हैं, कि मतलब जिसको पता है कि एक लेग पीस अगर मुंह में आ भी गया तो ज्यादा मतलब अगली भीड़ काट के बनाने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। तो तब तक तो खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाएगा एक्चुअली। एंड तो इस तरीके से देवर लाइक कि ना हाँ आपके साथ कोई आया हुआ है, देन देवर लाइक कि हाँ, बिकॉज ना वाइज मैन के पास हम जाते हैं काउंसिल के लिए, क्योंकि उनको पता होती है बहुत सारी चीजें कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है एक्चुअली। सो इन जनरल इट्स वेरी गुड टू कीप इन माइंड कि कोई दूसरा कुछ भी बताए, इसलिए जबकि मतलब फॉर एग्जांपल मैं जिस भी तरह के प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ, प्राणिक हीलिंग के भी, आध्यात्मिक योगा के भी, अलग अलग मेडिटेशन सेशंस भी,
मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग अपनी जो मतलब बात बताई जा रही है उसको प्रॉपरली अपने से वेरीफाई कर पाओ। ये मेरी कोशिश भी रहती है एक्चुअली। अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप खाली, आपको अच्छा लगेगा, आपको मेरे पे भरोसा हो जाएगा, पर आपकी खुद की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, तो कोई मतलब नहीं होगा उसका लॉन्ग स्केल में। आगे चलते हैं। अ मंत्र फॉर हैप्पीनेस। A mantra is a syllable, a sound, a word, or a set of words found in the deep state of meditation by the great sages. It is not the language in which human beings speak. Those sounds which are received from the superconscious state lead the seeker higher and higher until he reaches the perfect silence. The more awareness is increased, the more mantra reveals new meaning. It makes one aware of a higher dimension of consciousness. Exploiting the noble tradition by selling mantras is a market in the marketplace is absurd. Hmm. A mantra is exactly like a human being having many sheets. Gross, matlab अन्नमय कोशा, हमारी physical body, subtle यानी कि प्राणमय कोशा, हमारी etheric body, more subtle and subtlest, astral body, mental body, right? Take for example Aum. These three letters actually represent the three states: waking, dreaming, and sleeping, or the three bodies: gross, subtle, and more subtle. Physical body, astral body, and the mental body, right? But the fourth state, or the finest body of the mantra, is formless, soundless, and indefinable. A student, if he understands the process of Laya Yoga मतलब क्या होता है? लय योगा में आप अपने चक्रास में फोकस करके मंत्रस की चैंटिंग करते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसका इमेज में, उससे पता हो जाएगा। गूगल वैसे लय योग के बारे में ये बोलता है कि जो है अम, हम्म, या ओके, ये देखिए इमेजेस में देखते हैं एक बार। लय योग की जो इमेजेस हैं वो कुछ इस तरीके की है। चक्रास वाली इमेजेस हैं इनकी पूरी की पूरी, और ये चक्रास में बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज में, ये चक्रास में जो है दे फोकस ऑन द चैंट मंत्रास ऑन ईच चक्रा, राइट? अलग अलग चक्रास में, एंड उसकी दम पे दे अवेकन द कुंडलिनी इन व्हाटएवर दे डू, राइट? सो फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, राइट? एंड इसकी हेल्प से वो अलग अलग जगहों पे मतलब प्राणा को सर्कुलेट भी करते हैं। बहुत सारी चीजें उसी की हेल्प से करते हैं एक्चुअली। सो आगे चलते हैं। A student, if he understands the process of Laya Yoga, dissolution, can know the formless body and superconscious of mantra. Superconscious of mantra. Mantra is very powerful and essential, a compact form of a prayer. If remembered constantly, it becomes a guide. I used to collect mantras like people collect material objects, hoping that some new mantra I was about to receive would be better than what I already had. Sometimes I would compare myself to other students and think my mantra is better than his mantra. I was very immature. I call it crazy spirituality. Then there was a Swami who lived quietly deep in Himalayas between Uttarkashi and Harshil. I went to see him, and when I arrived, he asked, "What is the purpose of your coming?" I told him, "I want to receive a mantra." "You will have to wait," he replied. When Westerners go to someone for a mantra, they are prepared to spend a lot of money, but they don't want to wait. I tried the same thing. I said, "Swamiji, I'm in a hurry." "Then come next year," he said. "If I stay now, how many days will I have to wait?" He said, "You will have to wait as long as I want you to wait." So I waited patiently, 1 day, 2 days, 3 days. Still, the Swami wouldn't give me a mantra. On the fourth day, he said, "I want to give you a mantra, but promise that you will remember it all the time." I promised. He said, "Let's go to the Ganges." Countless sages have done spiritual practices on the banks of the sacred Ganges, and I've been initiated over there.
I stood by the river and said, I promise I will not forget this mantra. I repeated this promise several times, but he still delayed. At last, he said, no matter where you live cheerfully. This is the mantra. Be cheerful at all times, even if you are behind bars, anywhere you live, even if you have to go to a hellish place, create heaven there. Remember, my boy, cheerfulness is of your own making. It only requires human effort. You have to create cheerfulness for yourself. Remember this mantra of mine. I was both very happy and very sad because I had expected him to give me some unusual sound to repeat, but he was more practical. I apply this mantra in my life and find it successful everywhere. His spiritual perception seems to be the best of physicians, a real key for healing oneself. कितना अच्छा है मंत्रा, सिंपल सा मंत्रा है, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, जहां जाओ वहां पे भी खुशी बांटो, सिंपल मंत्रा है। एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सा कोई वर्ड मिल जाएगा। देखिए, एक इसमें बहुत सी बात ये बताई हुई है, वो ये है कि जब आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है तो मंत्रा का मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है। मैंने एक बहुत ही ग्रेट सेंट थे, आई थिंक ही वाज बुद्धिस्ट मॉन्क, उनकी मैंने एक बार एक इंटरनेट पे वो ब्लॉग पढ़ रहा था उनका, उनका नहीं है कि किसी और स्टूडेंट ने लिखा होगा। उसमें ये लिखा था कि ओम मनी पद्मे हूम जो मंत्र है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मंत्र है। वो एक्सेप्शनल ग्रेड ग्रेड की पावर है उसके अंदर। बट बात है कि उसकी पावर को अनलॉक करने के लिए आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड होनी चाहिए। अगर आप इसी कॉन्शियसनेस से चैंट करोगे तो उसकी पावर कितनी ही निकल के आएगी, मतलब पता नहीं। बट अगर आप की कॉन्शियसनेस प्योरिटी से, सेल्फ डिसिप्लिन से और मेडिटेशन की प्रैक्टिस से अगर आपकी एक्सपैंड कॉन्शियसनेस है, तब आपको उस मंत्रा का रियल वैल्यू जाके अंदर वहां मिलेगा। उसके बाद उसमें ये बोला गया था कि आपके एक चैंट ऑफ ओम मनी पद्मे हूम से उसमें सारा का सारा कर्मा कैन वैनिश, और जो सुनेगा उसका भी। अब इतनी पावर को सचमुच में अगर अनलॉक करना है तो आपकी कॉन्शियसनेस भी उतनी ही एक्सपेंडेड होनी चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है, राइट। इस तरीके से ओम के भी पता नहीं कितने कितने मीनिंग्स होते हैं एक्चुअली। सो उसके लिए डीप मेडिटेशन इज सॉर्ट ऑफ लाइक दी की फॉर दैट। आगे चलते हैं। A mantra for bees. There's a type of mantra called Apta mantra, which belongs uniquely to the particular sage who imparts it. Apta mantra. I want to tell you about an experience I had with such a mantra. There was once a Swami who lived in a small hut across the river from Rishikesh. In order to get there, you had to cross the Ganges on a swinging rope bridge. At that time, Rishikesh was not overly populated. Wild elephants sometimes came at night and ate the straw from the walls and roof of our huts. While we were sitting inside, they would come in big herds of 30 or 40 and would sometimes eat half of a hut. Tigers also roamed about. It was still quite primitive. Following my master's directions, I went to stay with that Swami across the river. Early in the morning, Swamiji would go for a dip in the Ganges, and I would go with him, for I was expected to follow the customs wherever I stayed. After our baths, we would take the twig of a tree, crush its end, and make it into a brush to clean our teeth. We would do this every day. Swamiji's disciple would climb up a tall tree and pull off a branch to make toothbrushes. उनके बाल तो कितने लंबे हैं यार भाई। तात वाला बाबा ऑफ ऋषिकेश, ततवाला बाबा, tat, tat wala baba. One day Swamiji climbed the tree himself. He didn't usually do that, but this time he wanted to show me something. He was over 70 years old, but he climbed the tree easily. There was a hive of wild bees in that tree, but he made no effort to avoid it. On the contrary, he climbed up to that very branch and started talking to the bees. From down below, I shouted, Swamiji, please don't disturb the bees. I covered my head because I thought if they are disturbed, they will also sting me. They were large and dangerous.
Bees. So dangerous, in fact, that if 10 or 20 were to sting you, you might not survive. Swami pulled off a branch right by the hive, but the bees were not aroused. He came down safely and said, "Now you go up and pull a branch for yourself." I replied, "I don't need one. I can live without it." Then I added, "If you want me to climb the tree, first tell me the mantra that protected you." During that time, I was fascinated with mantras and I wanted to know this mantra because I wanted to show people what I could do. That was my purpose. देखिए आप ना मैं को बात बता देखिए कुछ लोग जो होते हैं जो कि रिलेटिवली स्पिरिचुअली इमेच्योर होते हैं उनको ना दूसरों को दिखाने के लिए दूसरों से मैं अच्छा हूं या नहीं वो साबित करने के लिए बहुत जल्दी रहती है उनको एक्चुअली उनको डेप्थ में में जाने के बजाय फिनोमिनल इफेक्ट्स में ज्यादा वो रहता है कि कैसे 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 मतलब आई कैन वॉक ऑन वाटर करके ना फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कुंडलिनी अगर जाग जाए तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी काम करती है मैं आपको दोबारा बताता हूँ अगर आपकी कुंडली प्रॉपरली जाग जाती है तो इट कैन वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब इट कैन एक्चुअली डू थिंग्स फॉर यू जो कि आप ग्रेविटी यू कैन बेसिकली वॉक ऑन वाटर यू कैन फ्लाई not like Superman exactly but you can float properly things like that so Kundalini can work in that sense very clearly actually अब बात ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है तो डोंट कंसिडर कि वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है हम बात करें स्वामी रामा की रहे स्वामी रामा वाज वो बता रहे हैं कि मैं ऐसा था एग्जैक्टली अगर अब हम उनको देखेंगे तो उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज गॉन ही इज अ मास्टर प्रैक्टिकली लीप्स एंड बाउंड्स आ गया है मतलब राइट सो जस्ट बिकॉज किसी के ऐसे ट्रेड्स हैं इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी सेल्फ रियलाइजेशन अभी तक नहीं हुई है अभी भी ह्यूमननेस है बस इतनी सी बात है सो लेट अस नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर राइट आगे चलते हैं I replied, "I don't need one. I can live without it." Then I added, "If you want me to climb the tree, first tell me the mantra that protected you." During that time, I was fascinated with mantras and I wanted to know this mantra because I wanted to show people what I could do. That was my purpose. The Swami said that if I climbed a tree, he would tell me the mantra. So I climbed up to the hive. He said, "Go near and talk to them face to face. Say, I live here alongside you and I don't harm you. Don't harm me." I said to Swamiji, this is not a mantra. He replied, "Do as I say, talk to the bees. Your lips should be so close you can whisper to them." I asked, "How do they know Hindi?" He answered, "They know the language of the heart. So they know all the languages, just talk to them." I was skeptical, but I did exactly as he instructed, and I was surprised that the bees did not attack me. I said, "Swamiji, are they tame? Tame matlab ye paltu mein kya?" He laughed and said, "Don't impart this mantra to anyone, for it will work only for you. Don't forget what I'm telling you." Later, when I traveled to more populated areas, I would usually stay outside the city in a garden, and people would come to see me there. I was young and immature and wanted to boast. I would climb the tree and casually take some honey from the hive without incurring a single sting. It was always a surprising feat. When I was in Bhiwani, Punjab, a goldsmith whom I knew well requested, "Please give me the mantra." I agreed, forgetting that the Swami had told me it would only work for me and for nobody else. I told him how to talk to the bees. He climbed up to a hive and repeated the mantra, but it didn't work. The bees attacked him, hundreds of bees at once. He fell from the tree and we had to rush him to the hospital, where he remained in a coma for 3 days. I was worried, thinking, suppose I've killed this poor man. I prayed continuously that he would be spared. The third day, I was astonished to see that the Swami who had given me the mantra appeared at the hospital. He said, "What have you done? Through your showing off, you have nearly killed someone. Let this be a final lesson to you. The man will recover in the morning.
but I'm withdrawing the power of this mantra from you. You can never use it again. Since that time, I have been more cautious. Sometimes words of great man can have the effect of mantra. Sometimes the words of a great man can have the effect of a mantra. Whenever a great man speaks to you, you should accept his words as mantras and practice them. सो हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर है, फॉर एग्जांपल मास्टर चोगो कुसोई, उनके जो अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं वो इस तरह की 5 या 6 बुक्स हैं उसमें रिकॉर्डेड एक्चुअली. सो इनको इन जनरल हम पढ़ते हैं एंड वी ट्राई टू गेट सम इनसाइट्स और अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट. वैसे ही अगर आप जाएंगे औरबिंदो आश्रम या फिर औरवल जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है मदर के भी और औरबिंदो जी के भी जो बुक्स के मतलब उनके जो बुक्स हैं, टीचिंग्स जो हैं वो बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं. लोग उनको भी मतलब पढ़ते हैं ना. उनकी टीचिंग उनके मंत्रास के फॉर्म में होते हैं. ओशो की बुक्स में कोई जो उनको फॉलो करते हैं, ईशा फाउंडेशन में सदगुरु को फॉलो करने वाले, तो इस तरह के. एंड प्लस कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, है ना. तो अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइप की, इसेंशियल सबकी सेम ही होती है टीचिंग, बट अलग अलग फॉर्म में मतलब प्रेजेंट की होती है. बहुत ही फेमस वाली बुक है, उसका नाम है दाओ दे चिंग. उसमें एक सिंगल सिंगल लाइन के स्टेटमेंट दिए हुए हैं दाओ दे चिंग में. और वो मेरे ख्याल में आज तक की सबसे यूनिक और पावरफुल बुक मतलब मैं देखता हूँ उसको. अम, वो लिखी थी, किसने लिखी दाओ दे चिंग? मुझे याद नहीं आ रहा कि वो किसने लिखी थी. सॉरी, मुझे भी याद नहीं है. आपके आप में से किसी को पता है तो प्लीज यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है. दाओ दे चिंग, हाँ. लाओ त्सु. थैंक यू सो मच. लाओ त्सु ने लिखी थी. एंड उस बुक में इतने सिंपल, जैसे कि एक बहुत सिंपल सा फ्रेज है, उसको समझने के लिए मतलब कई साल लग जाएंगे एक्चुअली. ये लिखा था कि द मोर साइलेंट यू आर, द मोर यू आर एबल टू हियर. सिंपल सी लाइन है. द मोर साइलेंट यू आर, द मोर यू आर एबल टू हियर. इतनी प्रोफाउंड लाइन है एक्चुअली. उसका इम्पैक्ट जो है इस लाइन का, वो गोज अक्रॉस हर फील्ड में, हर मतलब area of life में. If you want to know more, if you want to understand more, if you want to feel more, you have to be more silent, you have to be more observant. पर ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत superficial level का. Actual level में there are layers and layers of it actually inside. So जैसे कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में या मतलब हैकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है कि आप नेटवर्क की वायर पे आप जितना साइलेंटली आप रहते हो, आप उतना ज़्यादा डेटा एब्जॉर्ब कर सकते हो, आप उतना प्रोसेस कर सकते हो एक्चुअली. ये मैंने पहली बार वहां पढ़ा था एक्चुअली इसको. एक सीडी आती थी उस टाइम पे, उसका नाम था बैक ट्रैक. अब नहीं आती है. तो उस टाइम पे दैट दैट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फ्रेज ऑफ दैट. उसका वॉलपेपर था इसी का. द मोर साइलेंट यू आर और द मोर क्वाइट यू आर, द मोर यू आर एबल टू हियर. सो यू नो, इस तरह की फ्रेजेस से वो भरी हुई है एक्चुअली बुक्स. एंड अगर आप लोगों ने लेवल 1 किया हुआ है अराबिक योगा का, आप लोगों में से जिसने भी, आप उस तरह के एक फ्रेज को लेके आप उस पर अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन कर सकते हो एक्चुअली. बहुत ही पावरफुल है. इनफैक्ट हम क्योंकि बात कर रहे हैं मंत्रस की, मंत्रस खाली वर्ड्स नहीं होते हैं. मंत्रस बेसिकली सिंबल्स होते हैं, उनको वर्ड का फॉर्म दिया जाता है एक्चुअली. और क्या क्या सिंबल्स होते हैं, जैसे कि टैरो कार्ड्स हो गए, वो तरह के सिंबल्स होते हैं, राइट. आप उनको एक तरह का मतलब डिस्क्रिप इमेज के फॉर्म में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट. हमारे जो ग्रंथ होते हैं, धर्मों के जो ग्रंथ होते हैं, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह वगैरह, राइट. सो वो भी जो है, देर आर ऑल्सो मंत्रस, और उनकी जो लाइंस होती हैं, ये श्लोक होते हैं, दे एक्ट एज मंत्रस एक्चुअली. आगे चलते हैं. द मिस यूज ऑफ अ मंत्र. There are some manuscripts in the monastery to which access is strictly prohibited. No one is allowed to read them except the head of the monastery. They are called Prayoga Shastras. They described very advanced practices. My master used to say, "You are not to experiment with those manuscripts." But I was obstinate and eager to know what was written in them. I was 18 years old, fearless,
but somewhat irresponsible. I thought, I'm quite advanced. Why did they write these manuscripts if they were left to be unused? I should do experiments with the practices in these manuscripts. My master is very powerful. He will protect me if something goes wrong. My master gave me one of those manuscripts to carry for him on a journey. He said, do not open it. I was very curious and resolved, if he leaves this manuscript with me and I find myself alone, I'm going to read it. One evening, we came upon a small dwelling on a bank on the Ganges. My master went inside the hut to rest. I thought, here's my chance to study the manuscript. There were no windows and only one door in the little dwelling. I locked the door from the outside. I thought that I would spend the whole night discovering what was in the manuscript. It was a moonlit night and I could see clearly. The manuscript was wrapped in a tied with a string. I took my time to unwrap it and then started reading. It described a certain practice and the effects it would produce. After reading for an hour, I thought, why not try it? So I put the manuscript aside. It said that only a very advanced yogis should do this practice, and that if it were not done properly, it would be very dangerous. At that young age, I thought I was very advanced. So I commenced doing it. It involved a repetition of a special mantra in a particular style with certain rituals. That mantra awakens a power outside of a person as well as inside. Wow, ये कौन सी power है? That mantra awakens a power outside of a person as well as inside. The book said that the mantra had to be repeated 1001 times. I repeated 900 times. Nothing seemed to be happening. I concluded that there would be no effect, but when I came to 940, I saw a huge woman nearby. She gathered some wood and started making fire. Then she put water in a big vessel and put it on the fire to boil. By then I had lost, by then I had counted to 963. The last I counted was 970. And after that, I lost track because I saw a huge man come in from the same direction. At first, I thought this must be the effect of the mantra. I'll not look at him and complete the 1001 repetitions. But he started coming towards me, and I had never before seen or imagined such a gigantic man. He was completely nude. He asked the woman, what have you cooked for me? She said, I have nothing. If you give me something, I'll cook. He pointed at me and said, look at him sitting over there. Why don't you cut him into pieces and cook him? When I heard that, my teeth clenched and the mala I was counting with fell from my hand. I fainted. I don't know how long I remained unconscious. When I regained the consciousness, my master was standing in front of me. He slapped me on the cheek and said, hey, wake up. I would become conscious momentarily and exclaim, oh, that giant is going to carve me up, and then lapse into a faint again. This happened 3 or 4 times until finally my master kicked me, became more insistent, and said, get up. Why have you done this? I told you not to practice these mantras, and you locked me in, you foolish boy. From this experience, I came to realize the power of the mantra. I began practicing the mantra which my master had given me, and I began to count on it even for little things. I did many foolish and silly things when I was young, but my mantra, which created awareness for me, always helped me to come out of those situations. If mantra is not properly used with spiritual discipline, it can lead to hallucinations, as it did for me. Hallucinations are the products of an impure and untrained mind. Mantras become helpful when the mind is purified and directed inwards. Without knowing the mantra, without knowing the meaning of the mantra, the proper feeling cannot be aroused, and without strong feeling, mantra and its technical repetition is not of much use. So basically हमको ये सीखने के लिए आज मिला कि मंत्रस जो होते हैं, जो कि पब्लिकली जो दिए गए मंत्र हैं, वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं. मतलब
होते हैं, बट उन्हें आप किसी टेक्निक के साथ यूज नहीं करते हो। जैसे कि जहां तक मुझे पता है, कुछ मंत्र जो होते हैं वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। कुछ मंत्र जो होते हैं वो आपका कनेक्शन एक अलग तरह के बीइंग से करते हैं। कुछ मंत्र जो होते हैं वो आपके हायर सोल से आपको कनेक्ट करते हैं। कुछ मंत्र जो होते हैं वो आपको अर्थ से आपको और स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं। कुछ मंत्र जो होते हैं वो प्रोस्पेरिटी लेके आते हैं। कुछ मंत्र जो होते हैं वो आपके फिजिकल सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। कुछ मंत्र जो होते हैं आपको असीम पावर दे सकते हैं एक्चुअली। आइडियली ये मंत्रस को चैंट किया नहीं जाना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि जब तक आपका माइंड हाईली कंट्रोल्ड और हाईली प्यूरिफाइड नहीं है हर सिचुएशन में, तब तक कोई मतलब नहीं बनेगा उन चीज़ों को चैंट करने का। इनफैक्ट आई कैन गिव यू much worse situations you will probably land up in, जिनको बोलते हैं कुंडलिनी सिंड्रोम्स। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। कोई कोई मंत्र होते हैं जो कि आपकी वेब्स को टीयर कर सकते हैं एक्चुअली। कुछ कुछ मंत्र आपको हील प्रॉपरली हील कर सकते हैं। पर ये मंत्र बेसिकली जो होते हैं फॉर्मूले होते हैं, मतलब सिंबल होते हैं जो कि पावर को लेके आते हैं और पावर को मैनिफेस्ट करके उनको यूज करते हैं, मतलब उनको एग्जैक्टली ट्रेड करते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रांस बार्डोन की बुक पढ़ोगे, इनिशिएशन नॉट इनिशिएशन, द की टू द ट्रू कबला, उन्होंने हर तरह के मंत्र दिए उसमें, पर वो मंत्र उसको क्वाड्रुपोलरली यूज किया गया है। मतलब बॉडी, माइंड, सोल एंड स्पिरिट, चारों को कंबाइन करके एक साथ जब वो आप मंत्र बोलते हो, मतलब आपकी उतनी मास्टरी होनी चाहिए पहली बात तो। उसके बाद आप वो मंत्र पहली बात तो चैंट भी कर पाओगे पहली बात तो। उसको इस्तेमाल करके व्हेन यू स्पीक समथिंग, तब उसका इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होता है उसका एक्चुअली। एंड यू कैन डू प्रैक्टिकली एनीथिंग। तो जो बंदा या जो इंसान काबलिस्टिकली बोल सकता है, या मतलब जिसकी उतनी समझ है, या जिसकी समझ खाली इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जिसका जितना डेवलपमेंट है उस हिसाब से द पर्सन कैन स्पीक, देन काबलिस्टिक लैंग्वेज में ही कैन डू मैजिक। उसके वर्ड्स में मतलब मैजिक होगा प्रैक्टिकली। सो मंत्रास का मिसयूज बहुत खराब चीज होती है। अगर मंत्र आपको स्पेशली एडवांस मंत्र, मतलब कहीं पर देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे एक्चुअली, इंटरनेट पे तो भूल ही जाओ, नहीं नहीं देंगे। कुछ मंत्र होते हैं जो कि आपको सर्टेन इनिशिएशन के बाद दिए जाते हैं, जैसे कि आपको अरहत इनिशिएशन के बाद कुछ मंत्र मिलते हैं जिससे कि आप ग्रेट चीज़ें कर सकते हो। कुछ मंत्र आपको होली मास्टर बनने के बाद मिलते हैं। कुछ मंत्र आपको सिक्स इनिशिएट को बनने के बाद मिलते हैं। तो कुछ मंत्र जो है पूरे के पूरे मतलब ऐसे होते हैं जो कि पूरे के पूरे शहर या देश को चेंज कर सकते हैं। पर वो एक बहुत ही पावरफुल लेवल ऑफ इनिशिएशन के बाद आपको दिए जाते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिए जाते हैं। इट्स लाइक द वर्ड ऑफ पावर। तो समथिंग लाइक दैट, चलिए क्वेश्चन क्लोज करते हैं सेशन। To the Supreme God, to the great Divine Father, great Divine Mother, thank you for your great blessings. Thank you to our spiritual teacher, to all the spiritual teachers, to all the great gods and goddesses, to all the great, great ones. We very, very humbly thank you for your great blessings, especially to our teacher, and also to the great Lord Rama, Swami Rama, and to his great teacher, the great Bengali Baba. We thank you for your great blessings. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Take care, everyone, and I hope आपका दिन अच्छा जाए आज. God bless all of you.